which is a very big problem with all of us. Now that problem is called decision making. How many of you struggle with decision making? Decision making होती नहीं, टाइम पे नहीं होती, लेट होती है, डिसीजन से आप भागते हो, ऐसे ऐसे ऐसे. You usually say अच्छा बाद में, अच्छा बाद में, अच्छा बाद में. Yes? कितने लोग ऐसे हो जो जैसे ही डिसीजन आता है इमीडिएटली आंसर देके खत्म करते हो सारी, बिग स्मॉल एवरीथिंग, बिग एंड स्मॉल एवरीथिंग. Very nice, excellent. I love you guys. Great. Now for those of you who do not take decisions immediately and defer decisions, so let me tell you, deferring a decision is one of the most expensive things that you can do in your life. Now why and what? So let's look at the science of decision making. Suppose आपके पास किसी ने बोला कि अच्छा सर इसका क्या करूं मैं. Most business owners say अच्छा ठीक है मेरे को बता दे, मैं सोच के तेरे को बाद में बताऊंगा. Is that right? Or okay, so for some of you, you immediately decide. For a lot of you, you do not decide immediately. Is that right or what? You don't immediately decide. You say, अच्छा ठीक है, मेरे को बता दे, मैं सोच के बताऊंगा. Yes? Now, why do you do this? Because you want to take the best decision. You want to take the right decision. Yes? Now what happens when you defer these decisions? Eventually ये decision का answer आप कब देते हो? Last minute, जब वो decision सर पे खड़ा होता है. Yes or yes? You take it when that. अब इसके बाद लेट नहीं कर, अभी बस अभी बताओ दाम क्या है, कस्टमर को अभी देना है, इसके बाद लेट नहीं कर सकता. Yes? Now when you are under such a lot of stress and time pressure, and you know you have to do it right now, and you may not have the resources available to take that decision, will that decision be a better decision or will it be a worse decision? Worse decision. उस समय क्राइसिस पे आप you agree at anything. आप उस समय सामने वाले की मान, अच्छा ठीक है यार तू कर ले. Yes? Now, is that a better decision or is that a worse decision? आप लोगों ने decision put off क्यों किया था? To take the best decision. And what happens in 80% of the cases? You take the worst decision. You take the worst decision. So let me tell you one more thing about decision making. चाहे आप decision अभी लो, चाहे आप decision last minute पे लो, अभी भी ले लोगे या लास्ट मिनट पे भी ले लोगे, 10 out of 10 डिसीजंस ठीक होंगे क्या? 10 में से आपके 4, 5 या 6 डिसीजन सही होंगे, 4 तो गलत हो नहीं है. हाँ नहीं? So can you accept कि you will make 3-4 wrong decisions? No, you're not being able to accept it. अरे आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. अरे नहीं हजम होती है कि मैं गलत डिसीजन दे दूं. अगर आप, if you are okay with taking a wrong decision, you will make the right decision, and that's the beauty of it. And in any case, that decision causes stress. अरे वो डिसीजन सर पे बैठा रहता है ना, ये सोचना है बताना है, फिर वो आके बोलता है सर इसका क्या करूं, बताता हूं, फिर वो आके बोलता है सर इसका क्या करूं, अरे बताता हूं यार, सोच के बता, सोच के बताता हूं, और एंड में बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं. यस और नो? तो जब बिना सोचे समझे डिसीजन लेना है, आज लेके खत्म कर लो, वो स्ट्रेस खत्म करो. चांसेस आर कि अगर आपने अभी डिसीजन ले लिया तो 10 में से 7 सही होंगे, और एंड में मैं आपको बताऊं 90% आप वही डिसीजन लेते हो जो उस समय जबान से निकल रहा होता है. So from today onwards, you will never, ever defer, postpone a decision. If a question or a decision comes to you, big, small, anyway, you will either schedule immediately a time when you will sit down with 1 or 2 people, if you have to sit down with 1 or 2 people, but schedule it now. Put it on my calendar, call your EA, put it on my calendar. I have to have a DM meeting, decision making meeting with these 2 people for exactly 15 minutes. 15 minutes से ज़्यादा नहीं मेरे पास ये decision making करने के लिए. And we will only talk about this decision. But from now onwards, everybody align with me
that every time there is a decision that comes to you, you will make it now.